Hey, in this video I'm going to tell you all about Global UGRAD personal statement. We will see the common mistakes made by people, guidelines that are provided by Global UGRAD personal statement hoti kya hai, and we will see where to begin, and at the end of the video we're going to analyze a statement and see what's wrong with it. I am Ranjit Kumar and I was selected for Global UGRAD Fall 2019. Now let's begin with the video. Okay, so we're going to first talk about what it is not. UGRAD asks you to write personal statement, not the SOP. बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि Global UGRAD आपसे statement of purpose मांगा. नहीं. If you see their site, they are asking for personal statement. So there's a big difference between SOP and personal statement. जो statement of purpose होती है या SOP होती है वो normally like जब आप किसी भी कॉलेज में admission लेते हैं, not here maybe abroad, तो आपसे मांगते हैं एंड इसकी बेसिक मांगने का पर्पज़ ये होता है कि उसमें जो आप कंटेंट होता है मेनली फोकस होता है कि लाइक व्हाई डू यू चूज स्पेसिफिक कोर्स और फील्ड एंड व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू दिस यूनिवर्सिटी. पर्सनल स्टेटमेंट इज एज द नेम सजेस्ट मोर पर्सनल. उसमें ये होता है कि लाइक दे वांट टू नो मोर अबाउट यू, दे वांट टू नो बियॉन्ड योर ग्रेड्स कि who you are as a person and what are your goals and objectives and what you have achieved and what you want to achieve and what's your future objectives. So okay, so we're going to move on. So I told you what is personal statement, but here is the dictionary definition if you want to. There it is, a written description of one's achievement, interest and so on. I mean it's the same thing, I just wanted to make sure that you have a dictionary definition of personal statement. Now common mistake, lying. लोग झूठ बोलते हैं अपनी पर्सनल स्टेटमेंट, वो चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो कि उन्होंने की नहीं होती हैं एंड देन दे नॉर्मली गेट कॉट. जो ये लोग होते हैं लाइक जो एप्लीकेशन वगैरह देखते हैं वो सालों से ये काम करते आ रहे हैं, उनके पास सालों से एप्लीकेशन आ रही हैं एंड दे श्योरली नो हाउ टू स्पॉट अ लायर, सो डोंट लाई. कुछ लोग क्या करते हैं अपनी स्टेटमेंट पर्सनल स्टेटमेंट खुद नहीं लिखते हैं, किसी और को हायर करते हैं या किसी और से लिखवाते हैं. सो दैट्स रॉन्ग टू एंड यू शुडंट डू इट. कुछ लोग इससे और भी ज़्यादा ऊपर वाला काम करते हैं कि वो किसी की और की पर्सनल स्टेटमेंट कॉपी कर देते हैं और क्या करते हैं कि अपना नाम वगैरह चेंज करते हैं, सर्टन चीज़ें चेंज करके वही सबमिट करते हैं. डोंट डू दैट टू. नेक्स्ट एरर इज स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर. स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर आर रियली terrible. रीज़न ये होता है कि इससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट इज़ नॉट सिंसियर. लाइक आपके पास एक लाइक एप्लीकेशन आई थिंक फॉर मंथ के लिए ओपन होती है, मे बी मोर देन दैट, एंड विद इन दैट मंथ आपने इतना तक ध्यान नहीं रखा कि आपकी कॉमन जो मिस्टेक स्पेलिंग वो भी आपने ठीक नहीं की. एंड सेम गोज फॉर द ग्रामर. नाउ यू डोंट हैव टू बी लाइक रियली गुड एट ग्रामर टू बेसिक गेट सेलेक्टेड, पर आगे आपको थोड़ी बहुत ग्रामर आनी चाहिए. कॉमन्स वाली जो बेसिक मिस्टेक जैसे आप कंजक्शन कहाँ पर यूज़ करना या मे बी द यूज़ ऑफ कॉमा और फुल स्टॉप और ऑल दिस थिंग्स, राइट. वो अगर आपको इतनी ज़्यादा ग्रामर नहीं आती है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है बट आप ग्रामर में इतने अच्छे नहीं, दैन यू कैन गिव इट टू समवन फॉर एडिटिंग पर्पजेज. मेक श्योर दैट वो सिर्फ एडिट करे ना कि उसका कॉन्टेंट चेंज करे. ओके, ग्रामर के लिए एक दो और चीज़ ये हो सकती है कि डोंट रिपीट योरसेल्फ. आपके पास ओनली 250 वर्ड्स हैं, सो कोई किसी भी तरह की रिपीटेशन इज़ हार्मफुल फॉर यू. एंड यूज सिंपल वर्ड्स. लाइक कुछ लोग ये क्या करते हैं कि उनके जो वर्ड्स सिंपल होते हैं, फॉर एग्जांपल यूज़ के बाद यूटिलाइज या कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल करें, डिक्शनरी पे जाएंगे देखें इट्स अननेसेसरी, राइट. सो कीप इट सिंपल. सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है नॉट जस्ट इन पर्सनल स्टेटमेंट बट इन ओवरऑल प्रोसेस इज दैट दे डोंट रीड गाइडलाइंस एट ऑल. लाइक जैसे कि मोस्ट लोग ये कहते हैं कि ये पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है, ये SOP होती है, हालांकि वो रॉन्ग होती है. एंड it happens because you don't pay attention. So please pay attention to each and every detail provided by the UGRAD. Next mistake is starting late. आपके पास पूरा महीना होता है या मे बी near to that, so please start early. पर्सनल स्टेटमेंट राइटिंग इज काइंड ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस. तो जितना इसको आप टाइम देंगे उतना बेहतर होगा, उतना प्रेशर फ्री होंगे, उतना रिलैक्स तरीके से एक अच्छी थेरेपी पर्सनल स्टेटमेंट बना सकेंगे. ओके, मूविंग ऑन. गाइडलाइंस जो कि UGRAD ने प्रोवाइड की हैं, मैं उसके ऊपर बात करूँगा क्योंकि बेसिकली जो गाइडलाइंस हैं
वही कह सकते हैं बुलेट पॉइंट्स हैं आपके लिए, जो कि आपको ध्यान में रखनी है जब आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में लिखनी है. योर इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी, इसमें वो चीज़ आनी चाहिए कि व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, यू नो. आपकी पर्सनालिटी में डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं. वेदर यू आर, फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग really social होते हैं, you know, they can social pretty well, or maybe things like leadership is in your personality, or other things, you know, all those things. Your academic objectives, मतलब आपके when it comes to education आपके objectives क्या हैं, like what do you want to do when it comes to education, you know. Third is your goals related to the field of study and personal development. This is like let's say you are a medical student, then what are your goals regarding as a medical student, right? कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो किस तरीके से डॉक्टर बनना चाहते हैं, and what do you want to do is basically this field. Academic goals are a bit different because field goal are field specific, and academic can go beyond that. For example, some people may, you know, go pursue higher education than the undergrad and then so on. And when it comes to field of study, it's like जो भी आप फील्ड में पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड क्या गोल सकते हैं. अनदर एग्जाम्पल वुड बी लेट्स टेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, राइट. व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं टेक इंडस्ट्री में, या क्या आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस के लिए काम करना चाहते हैं, या क्या आप एज अ फ्रीलांसिंग करना चाहिए. व्हाट डू यू वांट टू डू व्हेन इट कम्स टू दैट. एंड देन द पर्सनल डेवलपमेंट इसके आपकी खुद की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट, राइट. एज वी ग्रो वी डेवलप, यू नो. इसमें ऐसे गोल आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से अभी आप इतने ओपन माइंड नहीं होते हैं, राइट. So it could be a personal goal that I want to be more open-minded. यहाँ आप इतने ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, जब उठते हैं जब सोते हैं, you know. You may want to be more disciplined person, or you may want to experience more cultural diversity as a part of the personal development. It could be anything. Time management is there. Maybe you want to stop procrastinating, or any other for that matter. Okay. Next is the reason why you wish to pursue them in USA and how it relates to your interests and future objectives. Now, इसमें दो parts हैं. एक part है the reason why you wish to pursue them in USA. इसमें ये कि for example अगर आपने कहा कि मैं एक computer science का student हूँ and I want to be an entrepreneur, right? Now, being an entrepreneur, आपको यूएस जाने से क्या फ़ायदा होगा, या अगर मैं चॉइस दूँ कि आप कहीं भी जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल द एंटायर वर्ल्ड, देन व्हाई वुड यू चूज यूएसए. आपको किस तरीके से वो बेनिफिट मिलेगा यूएस जाने का, एंड आपके क्या रीज़न है कि आप एज अ एंटरप्रेन्योर आप यूएस जाना चाह रहे हैं, एज अ डॉक्टर आप यूएस जाना चाह रहे हैं. एंड सेकंड पार्ट इज दैट हाउ इट रिलेट्स टू योर इंटरेस्ट इन फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स. नाउ हमने यहाँ पे एकेडमिक गोल की बात की, पर्सनल डेवलपमेंट गोल की बात की है, यू नो. सो वो जो गोल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर समवन हू वांट्स टू बी मोर ओपन माइंडेड, वो गोल कैसे लाइक यूएसए में जाके अचीव हो सकता है, या वो कैसे रिलेट करता है. फॉर एग्जांपल से ये हो सकता है कि इफ़ यू हैव सेड दैट यू वांट टू बी मोर लाइक ओपन माइंडेड, देन यूएसए इज़ वेरी लाइक डाइवर्स कंट्री. तो आप बहुत सारे डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट रिलीजियस के लोगों से मिलेंगे. दैट शुड रियली they can help you in being more open minded. For example, so just an example, later on I'm going to give you more example. Now this is the tough part. लोग को ये पता नहीं होता है कि चलो गाइडलाइंस मिल गई, बट where should I begin, क्या लिखना चाहिए क्या लिखना नहीं चाहिए. Well, there's a bad news and there's a good news. Good news is that you can write about anything you want to. Like कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यहाँ से स्टार्ट करें या वहाँ से स्टार्ट करें, अपनी एजुकेशन से स्टार्ट करें या पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करें, या तो आपकी अचीवमेंट बताएं, या कोई ऐसा इंसिडेंट बताएं जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज. यू कैन राइट अबाउट एनीथिंग. Okay, the bad news is that since you can write about anything, most people get confused. Like as soon as you get there, okay, where should I begin? So that's that. Now, moving on. This is one way to start the personal statement. This is only one way. Keep that in mind. You can use other methods to write it, or you can apply different approach as well. But this is another way. So this way consists of four things. First thing is that search for qualities. Qualities से मुराद ये है कि for example leadership एक quality है, being persistent एक quality है, being hardworking as quality है, या आपको time management करना आता है, that's quality to you. Then जब आपको एक quality मिल गई, for example आपने कहा कि
I'm someone who is like persistent in their work and I don't give up, right? ये एक goal है, sorry एक quality है. then आपको time ढूंढना है when you actually utilize that quality. ऐसा time जिस पे आपने वो इस्तेमाल वो लीडर सॉरी वो क्वालिटी आपने डिस्प्ले की या क्वालिटी आपने शो की हो. once you get that time, the second thing is that आपको एक स्टोरी बनानी है. now make sure that you use I or my or words like that, because this is personal statement. You want to write about yourself, so you have to include character. In this case, character will be you because this is personal statement. And then you have to describe the problem that was that the character faced. अब इसका मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से करना है, राइट. एंड देन एंड में आपको ये बताना है कि आपने उससे प्रॉब्लम से क्या सीखा. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि दैट यू आर परसिस्टेंट एंड यू डोंट that you don't give up quickly, right? ये आपकी क्वालिटी. अब आपने टाइम जो ना, फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ यूग्रेड. आप अगर आपने यूग्रेड में ही 2 बार अप्लाई किया ना, आप दोनों बार नहीं सिलेक्ट हुए हैं, दिस इज गुड एग्जांपल ऑफ बीइंग परसिस्टेंट. अब तीसरी बार भी अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्वालिटी मिल गई एंड टाइम ये मिल गया कि भाई सिंस लेट्स से दिस इज 2019, सो मे बी यू आर अप्लाइंग सिंस 2016 और 17. अभी भी आपकी सिलेक्शन 2 बार आपकी सिलेक्शन नहीं है, बट थर्ड टाइम ये अप्लाई कर रहे हैं, दैट्स परसिस्टेंट. इस स्टोरी में कैरेक्टर आप हैं and problem is that you're not getting you're not getting selected, right? And what you've learned from this problem is that keep going on, maybe next time select on. Now in this story you आपको realize होगा कि ये part के you know what you have learned from problem may not appear as strong, and that's fine, but this is only one way to approach it. जब इंट्रोडक्शन पे बात आती है तो आप बेसिकली किसी भी तरीके से बिगिन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ लोग लिखते हैं कि लाइक आई बिलीव इन दिस और वंस अपॉन अ टाइम दिस हैपेंड और व्हाटएवर यू नो. तो इसके लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि अब अगर आपको ये अप्रोच अच्छी नहीं लगती है, आप कहते हैं किसी और तरीके लिखना चाहते हैं, तो ये फाइन लाइक आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स ढूंढें. नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई बड़ा सा इवेंट हुआ, लाइक आपको एक्सीडेंट वगैरह हो चुका या आई डोंट नो किसी की डेथ वगैरह हो चुकी है उसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज. इट डजंट हैव टू बी दैट. अगर ऐसी कोई बात है ओके गुड, अगर ऐसी बात नहीं है देन इट्स फाइन. इट कुड बी सिंपल थिंग. छोटी बात ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंसिस्टेंटली ग्रेड कम आए एंड आप स्टडी नहीं कर रहे थे and then you took some action to do that, that's a good thing as well, because आपकी आदत नहीं थी पढ़ने की, but then you adopted a habit of studying. I know this sounds very small, but personal statement ये बात important है कि this is your story, right? They want to know about you and the real you, not the fake one that you're gonna actually make and write anything you want to. So make sure that you're authentic and anything that has changed your life or any incident that you remember. Another example could be as simple as this. If you want to display your leadership quality, you can even write as simple as that. For example, अगर कोई मतलब blind बंदे 2-3-4 जा रहे थे and बहुत सारे लोगों पर खड़े थे पर कोई उसकी help नहीं कर रहा था, but you stepped up and you helped them. This could be an example too. So it doesn't have to be something big or anything like that. It has to be true though, you know, जो चीज़ आपने की हो, जो चीज़ that really is stuck with you for this when it comes to introduction. We're going to move on. Now we're going to look at a statement and see what is wrong with it. ये मैंने statement ली है opportunity corner or something.com से, मैं link पे दे दूँगा description में. And I don't think it's really a good statement. उन्होंने कहा कि ये statement selected बंदों की है, and I don't trust them on that because most सारे जो statement है वो over 250 word की हैं and they only allow 250 words, so that couldn't be possible. But anyway, I'm just going to analyze it and see what's wrong. So, as I lay in bed, my eyes were set on the raindrops grazing through the roof. I began to think about how I managed to live in Rawalpindi. The raindrops grazing the panels were like myself, falling from the sky as if it has finally escaped the imprisonment of its predefined nature, rushing to anything within the reach. Damn. Now, what is wrong with it? कुछ ज़्यादा big word इस्तेमाल किए हुए हैं, right? It's unnecessary. And second, most important is that like it's not a novel.
Just don't try to write something as a fiction. As I lay it down, this is completely redundant. You can describe a scenario at time, but this is way too much, there's no need for this. And I have done a lot of research when it comes to personalized statement SOP, and this isn't the way to write it, so please do not do that. I'm not saying that if you do write like this you won't get selected, but आपके पास only like 250 words होते हैं and आपने first जो paragraph उसमें ही ये सारी चीज़ें बता दी हैं, and like बताए हुए इस तरीके से हैं that could be easily eliminated. You could have written as simple as that I was struggling to find out how can I actually can get away, or move from this place or whatever. That's really hard. That's simple. You don't have to make it like that, so don't do that. Let's see next. Now, अच्छा जब आप लिख रहे होते हैं statement, for example in this case, let's say this is introduction, like this is introduction, like from this to this. Now आपका introduction let's say finish हो चुका, then आपको guidelines जो है ना वो mind में रखनी है कि उन्होंने क्या कहा. उन्होंने कहा कि academic goals कौन से हैं, objective कौन से हैं. You have to write that. वो आपको मेंशन करना है. आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं वो मेंशन करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आफ्टर दिस. नाउ दिस पर्सन फॉर एग्जाम्पल इसके अगर आगे हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि आई पिक्चर्ड सिटिंग इन होगा बट व्हाटएवर. Oh, I pictured sitting carefree in a restaurant with my friends, standing on a rostrum delivering prize-worthy presentation. But I knew it was never going to be that easy. Again, she is imagining something in her head, and she had expanded that to over 2.5 line. Again, this isn't like, she may got selected, but this isn't the way to do it. Don't do this. Like इसको आप एक सिंपल तरीके से लिख सकते हैं. Like ये जो आप स्पेस इस्तेमाल कर रहे हो 250 वर्ड्स का, इसको आप एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें. इसमें आप जितनी मतलब ज़्यादा चीज़ें डाल सकते हैं वो डालें. वो चीज़ें जो उन्होंने कही हुई हैं आपको एक सिंपल आइडिया ट्रांसफ़र करना है. उन्होंने आपको इस तरीके से लिखना है जिसने आपको किसी ने कह दिया है राइट अ नॉवल अबाउट समथिंग. दिस इज नॉट द वे टू डू इट. दिस इज नॉन फिक्शन राइटिंग. ओके, moving on to that, I was being ignored, rejected and mocked at, but I never give up. Now this is okay, this is fine. This is telling that she had a problem, but I never give up. Okay, migrating from Badin gave me a lot of inferiority complex and all that. Okay, this one is important in my opinion. This is a good one, that she's mentioning what she wants to do. Like, I'm set on being journalist, English professor and a feature novelist. Now this is important because they told you like what do you want me to do and we write about your objective, so this is good. I don't agree with entirely with this, but this part is good. She's mentioning her goal, what she wants to do. Okay, let's see what we have next. Studying in a all female university is an issue, as I don't interact with diverse group of people. Accordingly, I have met online friends from different countries and cultures. Okay. Now this. Okay, see. This is space. Like she has talked about problem from introduction to this point. This isn't really. I mean, this can help, but I think she should have talked about more about how she would use things like that, rather than just saying this. Now, this in a way could be good. For example, when she talked about this statement, studying all female, and then she says being a literature and language to the United States. When language student, a multicultural country will give me first-hand experience interacting. I will be representation of my country to become an independent, more improved person. After returning, I will inform the students of my journey, empower students who will dream like me. You guys perfect platform that I'm absolutely looking for.
again, like, there isn't need for this. Like, she has kept describing problems in her life all day long. Maybe not the best way. Now, I'm not saying that you can't do that. Keep that in mind, okay? It's just my personal opinion. But she could have utilized this space to tell what other things that she likes to do beside studying, your interest beside that, or what she wants to do about the community when she, with her field, or how she will use being journalist to help community or something like that. And she would have, now this part is a good one, that she is describing that being literature, this one she is saying, okay, my handwriting on this one is terrible. This part, by the way, I should have just completed this. Okay, from here is to here. This is good because she is describing why United States is a good fit for her. Okay, so you want to do that. And then she moves on. Okay, yeah, this part is okay. From this one, I do approve. Like, whole paragraph is okay. She talked about why United States is the first, really good for her, and then she goes on how she will live in the country and written what she will do. This is important, that she will empower the people and do that. That's like one of the, it could be, it's possible to be like one of the future goals, So that's the SOP that we reviewed. Okay, we're gonna move back actually, and I'm going to tell you something. Wait, yeah, on here. Now, when we talked about interest and personality, okay, the things that you want to talk, that I told you, objectives. इसमें आपको क्या करना है कि I told you about academic objectives, तो आपको ये mention करना है, जैसे कि उसने like कहीं किसी एक point पे भी mention नहीं कि like what you want to do in terms of academic, you have to mention. उसने इस SOP में अगर हम देखें तो उसने ये बात उसने राय की है कि लाइक अब जो इसकी फील्ड है इंग्लिश लिटरेचर व्हाटएवर, उसके रिगार्डिंग दैट्स अ गुड वन. एंड उसने दूसरी बात पर्सनल डेवलपमेंट की भी की थी. वाई के उसने ये कहा था कि लाइक मुझे डाइवर्स कल्चर में जाना है एंड मुझे हेल्प करेगा सच एन एनवायरनमेंट, सो दैट्स अ पर्सनल डेवलपमेंट टू, राइट. उसने एट द एंड she did mention a reason to why she wanted to pursue her goal in the US, or why she wanted to visit, why she wanted to basically study or get selected in this program. उसने specifically ये नहीं कहा कि मेरे goals वगैरह कैसे achieve होंगे, but she did mention that, so that's good one. Now things that she missed were these, and definitely these. उसने अपने कोई भी interest वगैरह नहीं बताया. Nor she ever mentioned that because of her study she did something for community or whatever. In my opinion, she wasted a lot of words on basically on things that she could have written in few words. Okay, so that's that. Now, आपको भी ये चीज़ें ध्यान में रखनी है. That's the point. कि आप जब अच्छा आप इसमें ये क्या कर सकते हैं, when you talk about interest and personality, again, take a pen and paper, or open the Word document and type your interest and what defines you the person, or your teamwork or leader or whatever, and then also write down your objectives and also write down your goals and personal development goals. And then when you write the SOP, include these things, and if you do include these things, you're gonna be well ahead of many people. And the guidelines मेरी नहीं, this is on the application. उन्होंने mention किया हुआ है कि this is what we are looking for. तो कोई भी स्कॉलरशिप जब कह रही है कि यार हमें ऐसा बंदा चाहिए जो कि अपनी पर्सनल स्टेट में ये चीज़ इंक्लूड करे, देन इंक्लूड दोज थिंग्स. Okay, you don't have to do anything outside the box. You have to keep this thing in mind, and just do your right application. If you do so, there's a good chance you will get selected. And I also want to say that all the views against or expressed are mine here. So I'm not guaranteeing you anything. I'm not saying that one way is better than another way or whatever. You know what I mean by that. Just keep that in mind. And if I made any mistakes, just let me know in the comment section. I will put the link of that
site where I got this personal statement in the description box. Okay, and that's about it about the video. Again, if I have made any mistake, let me know, and if you have any recommendation, let me know too. And if you do have any question, put them in the comment section below. I will try to respond. I hope you find this helpful. Bye bye, and I hope you get selected too. Best of luck.